Thank you very much. So, since morning we have been discussing about the various facets of open and digital learning, and we are going to end this conference with a very interesting panel discussion, which we call as the fireside chat. This we are going to discuss on a very interesting topic, that is adoption of artificial intelligence in education, and what is going to be the teachers and students' perspective. To discuss this issue, we have three eminent panelists with us. We have Dr. Pargat Singh Gacha, who's from GHE College, Ludhiana. We have Dr. Amitash Ojha from IIT Jammu, and we have Dr. Jaspal Singh Barwal from the University of Jammu. All three of them experts in their areas and have been using technology for such a long time in enhancing the teaching learning process that there would be none better than them to discuss on this topic today. So starting today's discussion, my first question to the panelists is that we are talking about artificial intelligence. One thing is sure, and let us be sure about it. We all say that artificial intelligence is here to stay. What do you think is going to be the first impact for teachers and students when they start using artificial intelligence, and what do they perceive that how artificial intelligence is going to be beneficial for them? So if I can start with Dr. Parvez Singh, and then we can listen the mic sir from that side so that we can just. So what do you think the impact of AI is going to be on teaching learning? Thank you, Professor Adit, for starting this wonderful discussion. And I think, as you have rightly said that, hello, Yes. the artificial intelligence is a key factor in teaching learning process. In the paper presentations also we were discussing that we have to understand one thing, that all the pre-service teachers here or even the in-service teachers, that there is a generation gap. There is a 1 century gap. We are going to teach 21st century learner, and we all belongs to 20th century. So this is not a 5 years gap. This is not a 10-year gap. This is a 1 century gap. We have to understand this. And artificial intelligence is affecting each and every sphere of our society, every industry. So education is a part of one society, and it is going to affect us. And we all teachers need to prepare ourselves with the new technologies, with the new advancements in the field of artificial intelligence, in the field of digital and open learning. All the teachers need to keep updated themselves about other paper. To application of TPEC model to develop digital university. So all teachers need to update the knowledge, skill in the field of digital open learning to be relevant in the classroom. This is a dire need of the hour. Nice. Thank you so much. Dr. Amitash, your views on this particular topic of AI. I actually would take a very different view, uh, especially in all these classrooms when you see that you have to listen to a particular teacher for an hour, and that for an entire semester. और हम लोग में से कोई भी शाहरुख खान नहीं, so देख करके हम लोगों को तो आप लोग वो ज्यादा खुशी नहीं होती होगी. But one thing is that we come across as someone who brings all kinds of information, knowledge pieces, synthesize it, and deliver it in the classroom. I think with the AI, one of the things that is going to change is that synthesis is already being done by AI. We don't need teachers there. Then what will be our role, particularly? I think our role is more of a kind of facilitators or doubt clearers. So when we come to the class, you already know the topic, you have read that in any source, but we can bring in, that kind of
some questions or doubts that you have, and also motivate you or kind of telling you that, okay, go and read this material. So I think we are going to be more like facilitators than synthesizer of knowledge with the AI. मैं AI के बारे में जो सोचता हूँ अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के लिए, तो पहले हमें लगता था कि हमारे टीचर बोलते हैं कि हम 2 घंटे पढ़ के आते हैं, तब क्लास में आधा घंटा पढ़ा पाते हैं। अब और चैलेंज हो गया है, हम AI का इस्तेमाल जब क्लास में करने वाले हैं तो हमें और क्रिएटिव होना पड़ेगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पहले देखने पड़ेंगे कि जो मैं यूज करने वाला हूँ क्लास में क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि जैसे हम सुबह से सुन रहे हैं कि इतना फ्लो है हमारे सामने, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपनी क्लास में हर वो एग्जांपल दे देते हैं जिसका शायद जरूरत नहीं थी उस समय। तो एआई का इस्तेमाल अब जब हम करने वाले हैं अपनी क्लासेस में, हमें बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी क्लास में एज ए टीचर हमें लेके जाने पड़ेंगे, और बहुत सारे चैलेंजेस सामने से भी आने वाले हैं जो कि स्टूडेंट पहले लगता था कि जो टीचर बोल रहा है तो उसको हम सुनेंगे ही सिर्फ, अब स्टूडेंट सामने से काउंटर लेके आता है और फिर आपको उस चैलेंज से भी जूझना होता है। तो उसके लिए एआई तो ठीक है हमारे सामने है, लेकिन उसके जितने स्पीयर्स हैं हमारे सामने उनको हमें स्टडीज करके, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 2 घंटे पहले पढ़ना पड़ेगा, अब शायद सारी रात आपको जाके आधे घंटे या 40 मिनट का लेक्चर वो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब चैलेंज टेक्नोलॉजी के साथ भी है और टेक्नोलॉजी हर स्टूडेंट के पास है, तो उसके पास डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स हैं जो शायद आप तक पहुंच में है या नहीं है, वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो ये है हम सब लोगों के लिए। So two questions actually arise out of it. How do we prepare teacher educators in the AI age, and what will be the relevance of teacher educators? So एक तो हमें टीचर्स तैयार करने हैं, और जो टीचर्स ऑलरेडी वो टीचर्स तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी चैलेंज है। So both these challenges need to be mitigated. How do you think we can prepare, teacher educators for this age? टीचिंग जो प्रैक्टिस के लिए हम सब लोग जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत सालों से एक ऑर्गेनाइज करती है स्किल एंड टीचिंग कंपटीशन, पूरे पंजाब के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उसमें होते हैं। मुझे एक बार जाने का मौका मिला, मैं एक लैंग्वेजेस के लेसन्स के लिए इवेलुएटर था, और एक बच्चे ने कंप्यूटर यूज किया, सारा कॉलेज बोल रहा था कि ये टॉपर है, ये फर्स्ट आएगा। तो जब उसने लैंग्वेजेस का लेसन डिलीवर किया तो मैंने उसको इवेलुएट किया, तो मेरे हिसाब से वो कंप्यूटर यूज करते हुए भी किसी उस पे नहीं उतर रहा था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि वो फर्स्ट आना चाहिए, तो मैंने उसको फर्स्ट नहीं निकाला था। रीजन था कि उसकी जो मेथोडोलॉजी थी लेसन प्लानिंग की, वो उस इस लैंग्वेजेस के हिसाब से नहीं थी, तो इसलिए वो बेशक आपने टूल यूज किया है कोई, लेकिन वो उस मेथोडोलॉजी में फिट बैठने वाला तो हो, तभी हम उसको रेटिंग कर सकते हैं या उसको इफेक्टिव टीचिंग की तरफ ले जा सकते हैं। एआई बहुत हेल्प करने वाला है इन सब जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं या टीचर्स बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, क्योंकि एआई हमें जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस की मैं खास तौर पे बात करता हूँ, बहुत सारे जगह पे हमें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। आजकल मशीन्स हैं, आपको बिल्कुल ठीक उच्चारण बता देंगे कि ये इस तरह से इसको किया जा सकता है, तो वो बहुत हेल्प करने वाला है। जिन स्टूडेंट्स को हेजिटेशन होती है कि ये शब्द बोलते समय या ये वर्ड बोलते समय मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आई कि मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एआई बड़ी अच्छी हेल्प करती है उसमें, और किस जगह पे इस्तेमाल करना है वो भी हमें मिल जाएगा कि कहाँ आपने इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जब हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं या टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और जो लेसन प्लानिंग में इफेक्टिवली हम ज्यादातर टीचिंग एड यूज करते थे, और टीचिंग एड में भी जैसे लैंग्वेजेस के लेसन जब बनाते हैं बच्चे, तो मोस्टली उनको नहीं मालूम होता कि किस स्टेज पर कौन सा टीचिंग एड लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। और बहुत सारे लोगों को जब मोटिवेशन क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ फॉर्मेशन नहीं बनानी आ रही होती कि फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीसरा कैसे बनेगा। इसमें एआई बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे चैट जीपीटी के बारे में भी आप सब लोगों ने सुना होगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो हम टीचर्स पर डिपेंड करें। Dr. Mitash, I mean, you would be facing the same conundrum when you're dealing with students who are from technology background, and although you are not preparing teachers per se, but still preparing engineers.
So where do you think AI would be helpful in preparing engineers? Yes, so I would go with this, considering it as an opportunity, not as a challenge. Right. So when you become teachers, one thing is that, as sir also was saying, that you have to prepare a lot of material to go and deliver it in the classroom. With AI, I think that time can be reduced. That you can just ask ChatGPT, what should I teach tomorrow? ChatGPT will give you the result. You still have to bring it together and give it to your students. And I would say that that gives you more time to interact with students. And as I in the beginning also said, that we are going to be facilitators. You have to inspire students, because students also know that all of this information is available anytime. Whenever I need it, I can just get it. But information being available and grasping it and understanding it requires some level of motivation. So I would say that मुंह बना करके क्लास में जाने से बेहतर है कि हम लोग मुस्कुराते हुए क्लास में जाएं और उनको बताएं कि भाई ये टॉपिक पढ़नी है, कहीं पे भी पढ़ो लेकिन पढ़ो. So I think AI would be a very good tool and opportunity for us to save us from doing lots of things that we spent a lot of time doing, especially preparing PPTs, etc. आज की डेट में आपके पास बहुत सारे tools हैं जो PPTs बना देते हैं. So why to waste time on that? Right. Dr. Racha, I mean, since you are involved with teacher preparation for such a long time, where do you think is the challenge in using AI in preparing teachers? So I think first challenge which everyone is facing, that the readiness, the attitudinal problem, the problem to adjust to that particular change, resistance to the change. This is the biggest problem in the teacher educators are facing, as well as the teachers are facing. As sir has rightly said, we need to understand what are the advantages of ChatGPT. For example, you are preparing one presentation, Gamma, Tome, different kind of application can prepare presentation within 40 to 50 seconds. Those 5 slides can be a line of action for you people. But you have to decide, you have to put your creativity to make it more relevant to your students. For example, I am teaching to a student of Jammu University. And that presentation is not meant for Jammu University. It's a common presentation. Then I will add some grassroots examples of localized content in that presentation to make that more effective. As sir has rightly said, now we can use that content. It can save our time. It can save our energy. Now we have to think creativity in a creative way to use that particular time for the development of high order skills of the student. We know the Bloom taxonomy, remembering, understanding, application, all these things can be covered through the ChatGPT or the other AI tools. But evaluation, the creation of new things, we can use all these things in a positive manner. Instead of giving the same information in a classroom, we can ask students to go to this website and read that content. And in the next day, teacher can start different kind of discussion, different kind of hands-on experience in the classroom on based of that content. In that way, we can involve our student, we can make them constructor of the knowledge, we can include constructivism in our classroom. So in this way, these AI tools, digital and open education learning tools can really help a teacher to arrange the material, to do the lower order of thinking. Then the role of teacher starts to develop higher order thinking skills among the student within the classroom, with the creativity, with the innovation of a teacher. One more thing I wanted to add while you are asking about the challenges. One thing that preparation for teacher is also to assess students. So not only preparing the content, but also assessing students. So we faced it last time that if you think about the real life and from situations, nobody tells you that do some work in an office where you can't access internet or mobile or something. But in exams, we tell them no cheating. So if they refer to any answer sheet or something on mobile phone, it's considered cheating. But think about it, if you offer them, okay, open anything and do it, they also get the answers from ChatGPT. So how to assess their understanding? So I think another challenge for us would be the conventional way of assessing students through exam or something. Probably we'll have to rethink
that how are we going to assess the learning of student, not just the memorization what the student has done. Yeah, that's an excellent point. In fact, it's not just about teaching, but about assessment as well. So, let's talk about if there are any tools available that can help teachers, assess material that students have generated out of AI, or are we, having that kind of information as yet to assess that kind of, output? One problem with AI tools is that they are customized. Right. If you go through your login, Hmm. it will give you a different answer. Right. And if you go from my login, it will give you a different answer. So I can't just really check. Hmm. But one thing is that I believe that my students are intelligent and they are using ChatGPT. Right. So trust all of them are using it. I have changed my method of assessment. No exams. Right. Come and meet me for 10 minutes. I'm spending time with them and asking questions that a normal human being would answer. Hmm. And I think that is one way, of assessing whether they are given the output as per their own learnings. Exactly. And another one is very tricky one that if students have given some answer and you want to check, the best way I used to do was copy it from the text and put it on Google. Hmm. Google will give you the source. At least 2-3 sentences if you are putting, you will know that from where the source has been taken. Right. ये चैलेंज आने वाले दिनों में सभी के साथ ही है जो लोग इवेलुएट करने वाले। मैंने बहुत सारे स्कूल टीचर्स से बात की जब वो अपने बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं या असेसमेंट चेक करते हैं या उन्होंने कोई चीज ऐसी दी हुई जो शायद उनको लगा था कि इनोवेटिव है, तो बच्चे दूसरे वो चीज बना के लाए और क्योंकि पेरेंट्स से भी हेल्प की और कुछ एआई से भी वो हेल्प ले रहे हैं। तो किसी एक सेमिनार में ये कहा गया कि ऐसे जो चैट जीपीटी टूल से जो क्वेश्चन इवेलुएट करके लाए हैं या सॉल्व करके लाए हैं कि स्टूडेंट लाए हैं, तो टीचर्स के पास भी नए टूल्स आ गए हैं। वो आप देख सकते हैं, जैसे सर ने अभी बोला कि प्लेजरिज्म चेक हो सकता है, कितने वैरायटी है उसके अंदर या कितना ओरिजिनल कंटेंट है वो वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये आने वाले दिनों में हम जो एज ए टीचर तैयार कर रहे हैं, इन सब लोगों को एआई टूल्स के बारे में और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उनकी यूजेबिलिटी के बारे में बहुत देखना पड़ेगा। मैं एक और भी बात करता हूँ कि एआई ने अब इतना रास्ता खोल दिया कि कोई किसी गांव में बैठा भी बंदा भी ना उसके भी असेस में है, उसकी भी पास तक वो नॉलेज पहुंच गई है जो पहले हम सब लोगों को जो शहरों में बैठे थे या एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बैठे थे जो उनके पास थी, अब ये हर घर हर जगह पे पहुंच गई है। वो चाहे कहीं भी बैठा है इंडिया के किसी कोने में, इतनी फास्ट वो एक्सेसिबिलिटी हो गई है। जैसे भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है कि सब लोगों तक हमें एक्सेस करना है, तो एआई बहुत जल्दी से पहुंचने वाला है हम सब लोगों के पास। तो उसके लिए अवेयर होने के लिए हम जो क्लास में, मैं जैसे अभी एक और एग्जांपल आपको सुनाता हूँ। मैं प्रगट उन दिनों में बीसीएम कॉलेज में पढ़ाया करते थे, तो मैं उस समय एक लेक्चर देने के लिए इनके कॉलेज गया, तो वो न्यू जनरेशन स्कूल्स पर वो लेक्चर था कि इन स्कूल्स में कैसे टीचर्स के पास क्या चैलेंजेस हैं। तो उसमें एक बच्ची ने खड़े होकर बोला कि सर मुझे क्लास में मजा नहीं आता टीचर जब पढ़ाता है। तो मैंने कहा क्यों मजा नहीं आता? तो वो बोलती कि वो जो चैप्टर खोल के पढ़ा रही होती है वो मेरे हाथ में भी बुक है, तो उसके एडिशनल वो क्या दे रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो टीचर एडिशनल लेके जाएगा या क्रिएटिव करके लेके जाएगा वो इफेक्टिव होगा ही होगा, वो बच्चों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इसलिए इन सारे टूल्स का यूज करते हुए भी अपनी क्रिएटिविटी बरकरार रखेगा कोई टीचर, तो वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है। Can I add one thing? In context of assessment, this is a really a tough task for every teacher to plan different kind of assessment tools, to do different kind of assessment techniques in a classroom. So AI can really help in this direction. We can find a number of application, number of websites which are providing so many easy way to create different kind of assessment tools. You can prepare MCQ, you can prepare objective type test, you can prepare subjective type test. You just put your topic. This topic related to CBSE class, this I want 20 MCQ on this particular topic. So it can really help the teacher to give a raw data. Then teacher can decide which question is relevant, which is not relevant. So nowadays you will find a number of application. Colons is one application.
Then quizzes is a one application. Smart Learning Suite Online is another application. Classroom Craft is another application. A number of applications are available over the internet, which teacher can select and use in the classroom to make the assessment work easy. And on these applications, a proper record, a proper progress report of student can also be recorded. So in this way, we can say that these applications can really help a teacher to plan different kind of assessment tools as well as to keep a record of all the performances of the student. So it can really help the teacher if we can select one application and work on that particular application. Thank you. So coming out of this, we just saw a demonstration of a software last week, which is an automatic question paper generation system. So one of our teachers just uploaded the syllabus of B.Ed semester 3 of one of the papers, and the AI automatically prepared long answer questions, short answer questions, MCQs, and also classified them on the basis of what level of Bloom's taxonomy will these questions be rated. So the kind of advancement, I mean, the teacher doesn't even have to now prepare a question paper. It will automatically be AI generated. But coming to the last point of this discussion is ethics. Now, when we are talking about AI, using AI, teaching, learning, letting students use AI, what about ethics? I mean, what are those ethical considerations that teachers need to have? What are those ethical considerations that students need to have so that we can, safely say that using, yes, AI to certain extent is justified and we should let students use that. Else, what would be the difference between them cheating or preparing, your answers using AI tools? So if ethics could be addressed, maybe we could, close this session on this good note. So, any one of you. I'm starting this. Yes. You have rightly pointed out, Dr. Aditji, the ethics is a main consideration whenever we are using this digital and open learning resources. Now, I would like to share one example with you people that अगर आपका कोई भी relative किसी अदर कंट्री में पढ़ रहा हो, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अगर वो 9th-10th का स्टूडेंट आपको कॉल करता है किसी हेल्प के लिए कि मुझे इस टॉपिक पे आपकी हेल्प चाहिए, we Indian usually say that tell us the topic, we will prepare your PPT, we will prepare your paper, but you can listen a number of times answer from that particular student that no, I want idea, I want your guidance, I will prepare myself. This is a culture in the schools. Plagiarism is taught from the 6th class, from the 7th class, from the 8th class. The ethical issues are taught at school level, how to use this content. It is not like that blindly take something from the internet and use in the classroom. So they people teach all these things in a classroom. So we need to train our students. First of all, we need to train ourselves. Teacher educators, then to the would-be teachers, then to the students from the school age, what to use and what not to use. We have to develop these ethical skills, ethical consideration among the student from the school age. Then the work can be very much easy. So we all have to put efforts together for this particular concern. Ojasa, please. I again have a very different opinion on this. Ethics is a matter of change. What is ethical now was not ethical 100 years back. Yes, that's right. So, in that sense, right now also we do not know what is the mechanism that all AI tools are using. It's a deep learning model. You have large learning model, what they call LLM, and they are generative. So, as a matter of fact, they are not copying from others. Right. So, technically. Technically. Now, if you say that if I'm inspired by somebody and that is considered plagiarism, then I think we'll have to probably rethink about this whole idea of ethics. So I think that in coming days, probably we'll have to look into this matter that what exactly do we want our students to learn? The content. हम लोगों के जमाने में हम लोगों को कहा जाता, हमारी एक टीचर थी हिंदी की, रामधारी सिंह की कविता याद करके आ जाओ, तो हम लोग याद करके आ जाते थे और हम लोग को 100 मार्क्स मिल जाता. I don't do it with my teachers. I tell them that रामधारी सिंह की ये कविता है, अगर उसका मतलब मेरे को समझाओ.
तो आप कंटेंट उनको याद करवाना चाहते हैं या फिर आप उस जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है. Now, if a student, even if he is copying it from 100 different sources, and they are not copying, they are just using generative AI, and are able to organize it in a certain way which makes sense, I think there the ethics will have to be relooked at. Yes, that's right. एथिक भारतीय चिंतन में तो बहुत गहराई से है और खासतौर पे ये इस्तेमाल लिटरेचर के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब नॉलेज पार्ट पे हम बात करते हैं तो नॉलेज पार्ट तो डिलीवर करना है, वहां हम रेफरेंस दे देते हैं कि फलां ने ये कोटेशन ये इस तरह से कही है, तो वहां इजीली है एथिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए। लेकिन जब हम लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं, वहां कोर्स में बहुत सारे केस चल रहे हैं। उसने मेरी रचना चोरी की, छपवा दी, उसने मेरी रचना की, छपवा दी। तो ये चैलेंज तो है इस जमाने में कि मुझे क्या मालूम कि बेंगलोर में जो हिंदी में कोई एक कविता लिख रहा है और मैंने उसकी वहां से ली और अपनी यहाँ एक मैगजीन में लगा दी, तो वो उसको चैलेंज देखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज के टूल्स में, एआई के टूल्स में वो पहचानी जा सकती है, जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे। तो लैंग्वेजेस को लर्निंग के लिए मैं आप सब जो स्टूडेंट्स हैं बीएड से जो डील करते हैं, टॉक पॉल नाम से एक ऐप है, इसमें जाएंगे तो आपको लैंग्वेजेस में बहुत सारी हेल्प करने वाला वो एक टूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एथिक तो डिपेंड करता है कौन बंदा कितना चालबाज है और कितना सच्चा है, वो अपनी कक्षा में कैसे वो रेफरेंस को लेके आ रहा है, तो वही वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी एथिक्स का बहुत बड़ा एक सवाल है हम सब टीचर बनाने वाले लोगों के लिए, कि वो जब भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो उसको, जैसे मुझे आजकल मेरे जो स्टेटस है, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस लेने के लिए एक बार मुझे जरूर वो व्यक्ति मैसेज डाल देता है कि सर मैं ये यहाँ से आपका ले लूं मैसेज, जबकि मैंने भी कहीं से लिया होता है लेकिन फिर भी वो उनमें एक है कि भाई वो पहले पूछ लेते कि सर मैं ये आगे कहीं आगे अपलोड कर दूं ये वाला मैसेज या नहीं करूं। तो जैसे होशियारपुर से एक मेरा स्टूडेंट ही है, वो मुझे हर बार जब भी कोई थॉट उठाता है तो पूछ लेता है कि सर मैं डालूं या ना डालूं। तो एथिकल के क्वेश्चन तो है हमारे सामने कि क्या हम उनको फ्रीली यूज कर पा रहे हैं या किसी का किया हुआ से पूछ लेते हैं। मैं भी कभी कभी उनको बोल देता हूँ मैंने भी कहीं से लिया हुआ है, तो फिर वो मतलब एक है उसके अंदर मन में तो है ना कि मैं पूछ के आगे कहीं डाल रहा हूँ, तो ये है चैलेंजेस हम सबके सामने। Thank you so much. So it was indeed a very, very interesting discussion. Yes, one question. सर आपने सब टीचर की बात की ना कि सेम बुक्स है, सो डू यू थिंक एआई विल रिप्लेस बुक्स इन द फ्यूचर? लैंग्वेजेस में तो नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेजेस का जब बात आता है तो वहां वो टेक्स्ट बुक्स, जैसे अभी रिसेंटली एक जम्मू में सेमिनार हुआ, वहां मैंने सुना बुक्स के बारे में जो बात मैं करने वाला हूँ। उन्होंने बोला कि वो बहुत एज बंदे थे और उन्होंने बोला कि मुझे देखने में और पढ़ने में बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मुझे कंप्यूटर पे वो बुक मिल जाए तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि वो बहुत अच्छे ढंग से वो मेरी हेल्प कर पाएगी। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है भाई, आपकी तो आंखें बड़ी मुश्किल में है और बड़ी मुश्किल से आप पढ़ पाते हो। बोलते जो टेक्स्ट बुक में जो मेरे हाथ में होती है ना, उसको मैं जब पढ़ता हूँ तो उसके रेफरेंसेस ढूंढने के लिए मुझे लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, डिक्शनरी में जाना पड़ेगा या वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्यूटर पे बुक है उसमें तो क्लिक करूंगा तो उसका सारा बैकग्राउंड मेरे पास होगा, उसके सारे रेफरेंसेस मेरे सामने होंगे, इसलिए वो बुक अच्छी है। बुक रिप्लेस नहीं हो पाएगी क्योंकि वो टेक्स्ट है और टेक्स्ट को पढ़ने के लिए टेक्स्ट तक ही जाना पड़ता है। तो जैसे मैंने वो एग्जांपल इसलिए दी थी कि हमारे बीएड में 5 पेपर है, तो पांचों की वो वालिया की किताब लिए घूम रहा है, कोई दूसरी किताब लिए घूम रहा है, तो वो टीचर अगर क्लास में वो वालिया को ही एग्जाम्पल देके निकल जाएगा तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसके लिए उसको काफी सारी बुक्स की तरफ, चौहान की बुक को देखेगा या अच्छे और ऑथर्स को बुक देखेगा, तब जाके उसकी बात बनेगी। या वो अपनी लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम जब स्कूल्स में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस एक टॉपिक के साथ बहुत सारे होते हैं, वो जब तक हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी क्लास के अंदर तब तक वो इफेक्टिव नहीं बनने वाला होता। और जब मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ हमारी डिस्कशन में जो 5 पॉइंट बुक के अंदर थे हमारे पास 10 हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी एक्सपीरियंसेस में काउंट हो जाते हैं। तो वो बच्चों के लिए और आने वाले टीचर्स के लिए और कुछ मटेरियल होता है हाथ में जो एक्स्ट्रा होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको सुनाता हूँ
मैंने जब पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप किया एमए हिंदी में, तो मेरी सारी क्लास एक ही बुक्स पढ़ती थी, मैं वो बुक्स नहीं पढ़ता था। मैं जितने भी लेक्चर देने के लिए हमारी क्लास में, हमारे कॉलेज में जितने भी लोग आते थे उनको सुनता था। उनके सुनने के बाद मैं उनकी कोटेशन, उनकी बातों को कोटेशन बना के अपने आंसर्स में लिखा, और फिर मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर पाया। तो कुछ आपको उनसे अलग होना होता है अपने बैच के लोगों से, तब आप कुछ अच्छा कर सकते हो। थैंक यू। It's a very interesting question whether books will be replaced or not. So I partially agree with you, but I also have another thing. आज से 20 साल पहले we never thought कि हम लोग बैंक नहीं जाएंगे। बैंक में जाते थे और जा करके अपना फॉर्म साइन करके पैसा जमा भी करना होता था, तो भी आप साइन करते थे। आज के डेट पे आपके मोबाइल पे फोन बैंक। So we don't know actually that in next 5 to 10 years what situation will come. And another thing that I think that books will or might be replaced is that books are printed and not changing. AI will give you the updated information. So if you really want text for a concept, updated concept, I think AI would be more beneficial than the textbooks. Right. Textbooks can give you the syllabus, that this is what you have to study, but the content can come from AI. Just 20 seconds. It is a very interesting question about the can AI replace the books. I'm agree with Professor Ojaji. In the coming years, we will see that different kind of QR code on books. It is already in the NCRT books. The simple content is given in the book. You can go in detail if you would like to see the audio of that lesson. Different website, different applications have recorded the lessons in the podcast form of that particular chapter. And nowadays, students are not reading the books. They are just scanning the QR code. That QR code is taking the student toward a video or an audio. Yes. If a student is all the time engaged in a mobile or a smart device, then obviously the student will be more inclined to learn from the digital devices. Here, the big question is that whenever we are discussing all about this digital and open education, the AI-based application, we have to keep in mind that the demography of India. We have two sides of India. One is a digitally advanced India and one with a digitally disadvantaged India. So there is a big digital gap in India. Whenever we are planning all these things, so we will not be enabled to decide in one direction. We have to plan for two ways. One for digital advanced technologies, as well as keeping in mind those people who are still not able to reach all these devices. We have to keep in mind the digital divide in India whenever we are planning for the next 10, 20, 30, 40 years. Thank you very much. So, to sum up this entire discussion and to end today's deliberations, what I can say is that all of us who are in the senior age group, right, we are at the cusp or a transition of technology. What we, as children, the technology that we had, when we started with black and white TVs, and now we are fiddling with mobile phones and tablets and talking about AI. All of you who are sitting at the back and who are the new generation learners, because we've lived half of our life, but you have almost 75% of your life ahead of you. So maybe you will have different set of challenges. So we consider our generation to be a transitional generation where we are at the cusp of change in technology from one generation to the other. But the coming generation, maybe everything that we've said today is going to be possible. There will be no books, there will be no exams, there will be nothing, maybe no schools at all, no educational institutions. AI will be teaching, people at their own homes. Maybe even before the child is born in the mother's womb, the chip will be implanted in the mother's brain, and फर्स्ट से 8 का सिलेबस जो है वो रूम में ही पढ़ा दिया जाएगा और बच्चा 8वीं पास ही बाहर निकलेगा। तो क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या होगा, आज हम सिर्फ साइंस फिक्शन की तरह उसको इमेजिन कर सकते हैं, पर जो हम साइंस फिक्शन में देखते हैं वो हर चीज पॉसिबल है, राइट? So anything is possible, and as I'll close with that line that Professor Sharma said in his keynote address in the morning, कि will technology replace teachers? तो उनका कहना था कि जो टेक्नोलॉजी आज है
वो तो नहीं कर पाएगी रिप्लेस, पर आगे आने वाली टेक्नोलॉजी क्या पता कर पाएगी. तो इट इज अ half answered question till now. So with that, I really thank all the panelists for delving into the ideas. So big round of applause for them. And to close, we just like to express a small token of our appreciation to all our panelists. I'll request one of the students to please pass on the mementos to us, and we can honor our esteemed guests. जाते जाते एक शेर हो जाए. ये टेक्नोलॉजी की बात से मैं जोड़ के इसको बात करूंगा. वो सरफिरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे. वो सरफिरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे. मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे. So yes, Dr. Parvir Singh Archa, please. Thank you very much for coming. Congratulations to you and your team for providing this platform to discuss and identify. Definitely. Dr. Amitav Oja. तो आगे Thank you. Thank you so much. So thank you everyone. A big round of applause for all our dear students. सबको करीब 3 बजे होती है, लेकिन आज स्पेशली सब रुके हैं हमारे लिए. So a big thank you to all of you, and thank you to all the participants who have come from outside and presented their papers. Thank you very much, and we hope that we'll have active participation in our next conference as well. Thank you so much. Thank you very much.